ओके, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। ओके, तो कैमरा ऑन करो फास्ट। कल का मिस हो गया हमें। एक्चुअली कल जो वो हवा चली तो लाइट चली गई, फिर रात तक लाइट आई नहीं, तो कोई बात नहीं, हम रिपीट करेंगे। रिपीट नहीं, हम वो शुरू कर चुके थे, अभी उतना शुरू नहीं किया था हमने बेसिकली। सो लेट्स शो दैट दिस पीथ पावर इंटीग्रेबल फंक्शंस जो हैं, सभी कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन, अटेंडेंस है भाई। तो आज हम काफी कवर करेंगे इंशाल्लाह। So let me start the whiteboard sharing. So मैंने ये कहा था हम दिखाएंगे रीज-फिशर थ्योरम को हम करेंगे, which says that pth power integrable functions, Lubix integrable functions. We have got Rees-Fisher theorem. So for 1 less than equal to p, strictly less than infinity, this LP AB, चलो 2 पाई लिखता हूँ मैं हमेशा AB लिखता हूँ, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम फोकस करेंगे LP 0 to pi पे, is complete, and it is, you have to remember what's the norm here. So norm of f here would be the pth norm. P is greater than or equal to 1, then this is a norm. You've got integral over this domain 0 to pi. You've got f t raised to power p d mu, this whole raised to power 1 by p. That's our norm. So keep that in mind. So once you keep that in mind, so this is a normal linear space. We show that it's actually a Banach space, a complete space. Now what? So now we take a Cauchy sequence and show that it converges inside LP 0 to pi. Now consider the Cauchy sequence, a Cauchy sequence. हमें Cauchy sequence ली, जिसका नाम हमने रखा f sub n in LP AB, and we want to show that it converges inside this space. Now to prove the convergence, of Fn, it is sufficient to show that a subsequence of Fn converges in LPAB. The reason is, in a metric space, if a Cauchy sequence has a convergent subsequence, then it must converge. And it is a normal linear space, LPAB. AB लिख रहा हूँ मैं फिर से 0 to pi. एक मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ इस टाइम. ABB, it could be any two numbers, no issue. Okay, hence passing to a subsequence if necessary, passing to a subsequence if necessary. ये टेक्निक हमने यूज की थी. We may assume that, मैं ऐसे लिखूंगा, we may assume that norm of f sub n plus 1 minus f sub n, pth norm, I mean, is less than 1 by 2 raised to power n. And by that I mean f2 minus f1 का जो norm है वो less than 1 by 2 है. इसी तरह से norm of f2 minus f3 का जो है this is less than 4. We can do it. अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ यहाँ पर भी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम वो देखो. ये हमने यूज किया था when we showed that x by y is complete in the first unit. Whenever x is complete.
तो मैं चाहता हूं तुम उसको रिवाइज करो। वहां जो एक तो उसका रिवीजन होगा, दूसरा ये जो मैंने लिखा ना, वी कैन एज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर अ Cauchy सीक्वेंस, वी कैन फाइंड अ सब सीक्वेंस, हम एक सब सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं विच हैज दिस प्रॉपर्टी। तो हमने कहा कि या तो ये फॉर द सीक्वेंस ही ट्रू होगा, इन केस इट्स नॉट ट्रू फॉर द सीक्वेंस वी कैन ऑलवेज फाइंड अ सब सीक्वेंस विच हैज दिस प्रॉपर्टी। So which implies that by the definition of this norm, it means that integral over AB, of course the big integral we are talking about, f mod of fn plus 1 at t minus fn at t raised to power p d mu whole raised to power 1 by p is less than 1 by 2 raised to power n for all n running from 1 to so on and so forth. Let me define another function f0 at t, क्योंकि 1 1 2 3 तो है ही, यहाँ से सीक्वेंस शुरू होती है, लेकिन मैंने 0 को डिफाइन किया टू बी 0 फॉर जस्ट द 0 फंक्शन। मैंने एक और फंक्शन डिफाइन की विच इज कांस्टेंट फंक्शन 0 on this interval, and after that I consider this function. Now consider g sub n t to be summation j runs from 0 to n modulus of f of j plus 1 at t minus fj of t. मैं चाहता हूं तुम इसको देखो, what do I mean by this? So gnt is basically, पहले अगर हम 0 देंगे तो क्या मिलेगा? It is f of f1 of t minus f0 of t plus f2 of t minus f1 of t plus so इसी तरह से करते करते you would have in the end fn plus 1 of t minus fn of t. ठीक है? So this is this function. Of course it's a non-negative function. Furthermore, अगर मैं कहूँ what is g1 of t, g1 of t दो ही terms आएंगी, और खैर ये तो 0 है, यानी f0 of t is defined to be 0, so g1 of t होगा f1 of t plus f2 of t minus f1 of t. Similarly, what would be g2 of t? g2 of t होगा f1 of t plus f2 of t minus f1 of t modulus plus f3 of t minus f2 of t. इसी तरह से मतलब so on and so forth, इस तरह की ये sequence of functions है. Of course ये sequence जो functions है ये non-negative sequence of functions है, right? And furthermore ये non-negative sequence of functions है. दूसरा, it is monotonic increasing, क्योंकि हम हर चीज पे एक मतलब एक ऐड ही कर रहे हैं हम after all. G1 को हमने एक non-negative चीज ऐड की, so it is increasing sequence of non-negative functions. And let g of t को मैं मानता हूं summation j runs from 0, इसी का लिमिट. पहले तो हम दिखाएंगे ये कन्वर्ज करेगा, but first let us denote it by this one. इसी का लिमिट, इसी सीक्वेंस का लिमिट, इसी सीरीज का लिमिट कह लो, but a series is a sequence of partial sums ultimately. Okay, by Minkowski inequality we have, अब मैं ये Minkowski inequality यूज करूंगा, which is basically the triangle inequality of LP spaces. When I have integral a to b modulus of gnt raised to power p d mu whole raised to power 1 by p, it is less than or equal to, I should I write it like that or not? चलो मैं सम बाहर निकाल रहा हूँ. बेसिकली है ना ये क्या है, दिस इज एक्चुअली, ये चलो लिख देते हैं पूरा, लेकिन थोड़ा सा जगह कम है. GNT की जगह आएगा summation j runs from 0 to n f j plus 1 at t minus f j at t mod, ये बन, ये mod है यहाँ पे, whole raised to power p d mu whole raised to power 1 by p.
अब मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी कहती है कि हम ये सम अगर बाहर निकाले तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगेगा ना अभी, ये तो हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू करूंगा, सो बाय मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू summation j runs from 0 to n integral over a b f j plus 1 at t minus fj at t raised to power p d mu whole raised to power 1। ये मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी का है हमारा। Now, but this would be less than equal to, मैं पहली टर्म को अलग करूंगा, I would write it as, ऐसे मैं लिखूंगा इंटीग्रल a to b f j plus 1 at t, चलो पहली टर्म अलग करनी है, तो j को 0 पुट करते हैं, यानी it would be f1 at t minus f0 at t raised to p d mu whole raised to 1 by p plus summation j runs from 1 to n. I've got f2 of t minus, oh sorry, fj plus 1 of t minus fj of t। वो मैंने क्या कर दिया, इसमें इंटीग्रल नहीं है इधर, चलो बराबर लेते हैं। It has integral a b of course raised to power p d mu whole raised to power 1 by p। Of course this has summation j runs from 1 to n। मैंने पहली टर्म को अलग किया, उसकी वजह है क्योंकि आई नो ये जो है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज जस्ट इंटीग्रल ओवर ए बी f0 t तो 1 है, इट इज f1 of t raised to power p d mu whole raised to power 1 by p plus now use that, जो हमने सीक्वेंस पे, चूंकि कोशी सीक्वेंस है, हमने कहा था we can assume this thing, so it means that it is less than or equal to, चलो यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, less than or, this is less than or equal to, actually this is basically summation, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा ही करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो। This can be written as summation j runs from 1 to n norm of fj plus 1 minus fj p, pth norm। और चूंकि ये हर एक जो है it is less than 1 by 2 raised to power j, so this is less than or equal to इंटीग्रल, जो कि मैं डायरेक्ट लिख सकता था f1 of t, चलो ये गड़बड़ है, थोड़ी सी जगह मुझे एक्स्ट्रा मिल जाती तो, या क्यों ना मैं यहाँ ये नेक्स्ट स्टेप में तुम लिखोगे, क्योंकि इसमें ऑडियो भी है तुम समझ जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में तुम लिखोगे दिस इज लेस देन और इक्वल टू, लेट मी इरेज इट हियर, ये नेक्स्ट स्टेप है जो ना मैं अब लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये दूसरी जगह जाए, j runs from 1 to n 1 by 2 raised to power j। Now what does that mean? That means ये चूंकि है this is a finite number, right? Because this is norm of f1 and f1 lies inside this p to power integrable function, है ना? So it means that once I've done this, so this is basically, let me, it means that, so next step में जाएंगे अब, it means that मैंने g नहीं रखा है, चलो ठीक है, it means that norm of, क्या था अपना, gn रखा था मैंने, gn at t whole raised power p d mu over integral gp whole raised power 1 by p is basically less than or equal to norm of f1p plus, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, summation j runs from 1 to n 1 by 2 j and this is less than 1, and it implies that मैं ऐसे लिखता हूँ integral ab of gnt p d mu which is equal to, मैं b को दोनों साइड से रेज पावर करूंगा, दिस इज एक्चुअली लेस देन,
चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन नॉर्म ऑफ f1 p प्लस 1, क्योंकि ये जो सम है ये हमेशा लेस देन 1 होगा, बिकॉज एज n अप्रोच इन्फिनिटी इट अप्रोचेस 1, तो यहाँ चूंकि फाइनाइट सम है तो इट वुड बी लेस देन 1, और अगर मैं चाहता हूँ फॉर ऑल n देन इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, यानी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू f1p प्लस 1 होल रेज टू पावर p. It is just the definition. हमने p को दोनों sides को raise power कर दिया. So what do we get? So therefore I have got a monotonic increasing sequence, right? A monotonic decreasing sequence of Lebesgue integrable functions such that उसका जो integral है, you have to remember that अगर ये monotonic decreasing है, क्योंकि नॉन नेगेटिव है, मॉड ऊपर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनका जो रेज्ड पावर p होगा that would also preserve that order. Now I have got a situation like this, right? So I've got a sequence of integrable functions. I've got a sequence of integrable for Lebesgue integrable functions such that the integral of those functions is dominated, it converges upwards to, and it is bounded in the limit. The integrals are bounded in the limit. So जो कि यहाँ पे है, so this is true for all n greater than equal to 1, such that this is less than or equal to जो भी है, it is bounded. कहने का मतलब ये है. So by Levi's theorem कहता है, Levi's theorem शायद तुम आगे पढ़ोगे, but I can't help it. If you have a sequence of integrable functions in this manner, such that integral the limit is less than equal to some number, it is bounded, it is less than infinity, then ये जो integrals हैं वो converge करते हैं. So then there exists an integrable function. So then there exists f belonging to LP mu such that f नहीं g लिखता हूँ इसका नाम, LP mu के बजाय चूंकि हम AB लिख रहे हैं तो हम वो लिखेंगे. इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, लेकिन यही एक थ्योरम है जो क्या बोलते हैं हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने नहीं किया. मैं यहाँ AB बहुत जगह पे लिख रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मेरे नोट्स में, हालांकि AB का मतलब है any two numbers. So any two numbers का मतलब it can be also 0 to pi. You don't need to be specific. So Levi's theorem ये कहता है, there exists a G such that 0 is less than equal to Gn goes upwards, and increasing है, it goes upwards, approaches G almost everywhere. So what? Now also, तो एक G मुझे मिल गया, such that this happens also from अगर मैं लूं f sub n plus k minus fn can be always written as this partial sum summation I runs from 1 to n plus k into fi of fi. I write it as a telescopic sum, इसको हम बोलते हैं. बस सिंपली इसमें चेक करना है कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना? So let me see whether this is correct. I think ठीक ही होना चाहिए, नहीं n+1 होना चाहिए. चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि, तो चेक करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो ये मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है. आई वांट टू चेक जो मैंने ऐसे लिखा, तो अगर मैं i को रन करता हूँ क्या होगा, इट वुड बी f i को पहले लिखा मैंने n+1 minus fn
फिर किया प्लस f क्या आएगा फिर n+2 minus fn plus 1 plus so on and so forth. लास्ट पे आएगा fn plus k minus fn plus k minus 1, राइट। तो इसमें क्या कैंसिल होगा, n+1 कैंसिल होगा, इसी तरह से इसका दूसरा, इसका मतलब ये और यहाँ पे होगा। तो बचा क्या, f of n plus k minus fn। सही है ये, तो जो मैंने लिखा ये बिल्कुल सही है। Now this is less than equal to summation I runs from by triangle inequality। और जो Lubix इंटीग्रेशन में यूजुअली हम t को मेंशन नहीं करते, but it is to be understood it is actually, चलो मैं लिख देता हूँ, it's evaluated at t where t belongs to this interval। but usually अब जो इंटीग्रेशन थ्योरी में है ना, हम उसको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अल्टीमेटली एक डमी वेरिएबल ही होता है इंटीग्रेशन। Anyway, so it is n+1 to n plus k, which is mod of fi minus fi minus 1. This is just a triangle inequality, and you can easily check this is actually equal to gn plus k minus gk। so ये तुम चेक कर सकते हो, मतलब ये तो डेफिनेशन सही है, ये तो हमें थोड़ा देखना पड़ा। so what does that mean? That means it follows that, अब हमें पता है ये जो सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्ज करती है ई। सो ये नॉन नेगेटिव है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसको मॉड लगा सकते हैं, नो इशू। सो तुम चाहे तो इसको मॉड लगा लो बिकॉज इट्स नॉन नेगेटिव एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या मैं ही लगा देता हूँ, यानी दैट इज एफ एन प्लस के एट टी माइनस एफ एन एट टी इन मॉडुलस is less than equal to modulus of gn plus k minus gk, and we know that this converges, therefore this is Cauchy, है ना? So therefore it follows that Fn converges pointwise almost everywhere to some function f। अगर तुम्हें ये पूरा समझ यहाँ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तुमने वो हिस्सा नहीं पढ़ा, लेकिन आगे चल के मतलब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने ये कर दिया। So there exists some function f, and furthermore I should write it like this, and also 0 is clearly less than equal to, let me write it as, ठीक है, and since mod of this fn can be written as modulus of f1 plus summation I runs from 2 to n fi minus, ये modulus नहीं है, fi minus 1, which is less than equal to gn, which is less than equal to g almost everywhere, right? It implies that ये जो modulus of f, ये जो लिमिट है इसका fn का, क्योंकि सभी n के लिए ये लेस देन इक्वल टू g है, which is a Lubix integrable function, it means that first तो ये है कि mod of f is less than equal to g almost everywhere, and hence f also must be p to power integrable over this interval 0 to pi। उसकी वजह है what we call sandwich theorem। If you have a measurable function, if you have a measurable function such that it's because of this, a measurable function sandwiched between two integrable functions is integrable, because this is integrable, this is integrable, function is measurable, right? So therefore this must belong to LP, and थोड़ा सा और, fx minus fnx जो है, it is less than equal to twice gx almost everywhere। t लिख लो, चूंकि हम इसको t लिखते हैं, doesn't matter,
almost everywhere on 0 to pi, and limit n approaches infinity because minus f is a t लिख लो, t raised power p is equal to 0. There is another theorem, Lubix dominated convergence theorem. If you have a sequence of functions that is dominated by a Lubix integrable function, you have a sequence of Lubix integrable functions that are dominated by a Lubix integrable function, then that sequence would converge to a Lubix integrable function, and also the integrals would converge. The big integrals would also converge. Yani 0 is equal to integral of limit n approaches infinity f n x minus fx raised to power p d mu, which is the same thing as, because integrals would also converge to the same limit. मतलब we can interchange the integral and the limit. मुझे लगता है तब ये क्लियर हो जाएगा, शायद वहां भी रीज फ्रेशर थ्योरम होगा जब तुम इंटीग्रेशन थ्योरी में ये पढ़ोगे. So you need not worry. अभी के लिए इतना तुम इसको मान लो. So this is limit n approaches infinity norm fn minus f p whole raised to power p, क्योंकि नॉर्म होता है, मतलब दिस इज द, मतलब नॉर्म होता है इसका pth root, that's equal to, so it implies that limit n approaches infinity fn minus f जो है norm p is equal to 0, which implies that fn जो है it converges to f belonging to LP 0 to pi. So इसमें हमने लीवाइज कन्वर्जेंस थ्योरम किया, लुबिक्स डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम किया. जब तुम वो पढ़ोगे तो तुम इसको फिर से देख लेना. सो फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमने प्रूव किया LP 0 to pi is complete for all p greater than equal to 1. Now of course p is less than infinity. अब इसकी कोरोलरी में या रिमार्क में हम ये लिख सकते हैं, या रिमार्क ही लिखते हैं हम, कोरोलरी. जो मैं चाहता था, इससे हमें ये चीज चाहिए थी, हालांकि ये हमें इतना जरूरत नहीं है. Now we know that now L2 0 to pi is complete, right? L2 0 to pi अगर complete है तो हम यूज कर सकते हैं अब. So and we know that n runs from minus infinity to infinity, right? Right, where en is equal to 1 by root 2 pi e raised to power iota nx is a complete orthonormal set in big L2 0 to pi, and therefore f of x जो है, f of f can be written as now f is equal to summation n runs from minus infinity to infinity fen, should I write it, fen into en for all f belonging to L2 0 to pi, इसकी Fourier expansion, and by Parseval's identity, if Cn is equal to fen, these Fourier coefficients of f, which is basically 0 to 2 pi ft e raised to power minus iota and t dt, अगर ये numbers हैं, then integral cn square
I runs from n runs from minus infinity to infinity is equal to norm f square. Now what I'm trying to say is कि for that is पहले तो ये है कि summation n runs from minus infinity to infinity Cn square is convergent, that is Cn n runs from minus infinity to infinity. It belongs to, the sequence belongs to L2, small L2. Now what we do now, we show that now since big L2 is complete, now suppose we define let fn, we define ourselves fn. ये वो वाला f नहीं है जो हमारा, हम एक function define करेंगे. Now should I write it like this? Okay. Now conversely, suppose Cn n runs from minus infinity to infinity belongs to L2, then we define a sequence of functions fn equal to 1 by root 2 pi into summation k runs from minus n to n. इसका nth partial sum हमने define किया, e raised to power iota kx. The functions e raised power iota nx divided by root 2 pi, n running from plus 0, plus minus 1, plus minus 2, forms an orthonormal set. Therefore, for m greater than m, ये idea हम इससे पहले भी use कर चुके हैं, orthonormality. fm minus fn का square जो होगा वो होगा summation mod k running from n plus 1 to m, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कोएफिशिएंट सारे, मतलब हम लिखते हैं mod k, मतलब उसका मतलब है it runs from n plus 1 to m और दूसरे साइड से minus n plus 1 to minus n, यानी दोनों साइड्स का ये nth पार्शियल सम है, would be equal to ck square. So which would go to 0 as n approaches infinity, because this ये जो हमने sequence ली है, we have taken it to be a square summable sequence. तो ये square summable sequence है, तो उसका मतलब है इसका जो tail है after a certain stage it must become arbitrarily small, और ये इसके बराबर है, it is because that it's an orthonormal set. मैं चाहूंगा तुम एक करो थोड़ा workout. So it implies that ये जो fn है, fn, मैं यहाँ जरा 2 वाला norm, fn is a Cauchy sequence in L2 0 to pi. Therefore, और ये complete है जो कि हम prove कर चुके हैं, LP complete है. So fn converges to some f belonging to L2 0 to pi. So that means I have got a function f that can be written as 1 by root 2 pi into summation n runs from minus infinity to infinity Cn e raised to power iota nx. तो मेरे कहने का यहाँ हमसे क्या मिला, ये सारा कुछ, तो हमें बेसिकली ये मिला, given a function f belonging to L2 0 to pi, we can find a sequence Cn inside L2. Also, given a sequence Cn contained in small L2, we can find this f, some function f belonging to L2 0 to pi.
यानी there is a one-to-one correspondence between this big L2 and small l2, the sequences of square summable sequences and square integrable functions. There is a one-to-one correspondence, and norm of f square जो है that's equal to norm of this जो भी ये sequence है, and it is equal to by Parseval's identity Cn square n runs from -infinity to infinity, which is basically equal to norm of C. Because square summable, sorry, it is actually C norm square, which means actually it's an isometry. So it's an isometry between L2 and big L2. तो ये हम इसमें हाईलाइट करना चाहते थे, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें तुमने वो अभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर तुम ये पोर्शन अभी के लिए छोड़ भी दो, नो इशू, हम आगे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है? So we stay with this space. तो अभी कितने मिनट है? 3 मिनट है। मैं चाहता हूँ हम आगे भी थोड़ा बढ़े। तो इसमें एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, that show that, चलो मैं लिख देता हूँ as an exercise, show that the sequence of functions इस तरह से हम करेंगे 1/π whole raised power 1/2, then 2/π whole raised power 1/2 दूसरी फंक्शन हमारी into cos x, then 2/π whole raised power 1/2 cos of 2x, so on and so forth. अगर मैं ये sequence of functions ऐसे ही जाता जाऊं, is an orthonormal basis in L2 0 2 pi, L2 0 pi not 2 pi, यानी orthonormal basis का मतलब यहाँ पे complete orthonormal set, the largest orthonormal set. Also, this is, although orthogonal in L2 0 2 pi, वहाँ orthogonal तो है, but it's not complete. But it is not complete. इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 1 मिनट मैं इसे बंद ही करता हूँ क्योंकि इसमें 1 मिनट कुछ है, तो मैं इसको काट देता हूँ, तुम फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? क्योंकि इसमें तो होगा नहीं 1 मिनट में।